Hello, good evening, everyone. How are you? Good evening, ma'am. I'm good. How are you? Good. Good evening, Ashna, Sandhu, Shivam. So, Sandhu, Shivam, I guess you are attending this session for the first time. Yes, ma'am. Please introduce yourself. Ma'am, my name is Shivam Sandhu. I am from Nahan, a small town in Himachal Pradesh. Okay, great. I am pursuing my bachelor's in commerce. Okay. And why you want to give IELTS? Are you planning for academic or general one? Ma'am, I am planning for academic. Okay. And how soon you want to give your exam? Probably next month. Okay, great. Good evening, ma'am. Good evening. Who's this? Ramandeep. Okay. Hi, how are you? Good, ma'am. Great, great, great. Ramchandra. Ramchandra, can you hear me? Hello. Ramchandra, can you hear me? Manmeet Dhillo. So the candidates who are attending this session for the first time, please introduce yourself. Manmeet, can you introduce yourself, please? Yes, ma'am. Yes. My name is Manoj and I'm from village Kawali, Sorry, Punjab. you're not audible. Your voice is very low. My name is Manoj and I'm from Kawali, Punjab. Okay, great. And you're planning for academic IELTS or general one? I'm academic. Academic. Okay, great. So let's wait for a few more minutes and then we will start with our session. But are you guys practicing from the babycode application? Yes, ma'am. Okay, so how many speaking tests have you done? On an average, how many tests you take in a day? Ma'am, initially one in a day because my office still I'm working. That's why I'm office in time. So one I will speak. And when you want to give exam? Ma'am, probably in May last or June first Okay. week. End of May or first week of June. First of each June, yes. Yeah. Okay, let's wait for everybody to join in. So are you liking these classes, the live sessions which are going on nowadays? Yes, ma'am, definitely. Oh, okay. So the candidates who did not have a subscription, like जिन्होंने membership नहीं buy करी है, please go and buy the membership of babycode application so that you can have an advantage. आप multiple tests download कर सको, right? Because if you're planning to give exam in the month of like May next month, so it's better to at least 2 to 3 mock tests every day, है ना? Because IELTS is not something which will come in 10 days. अगर आप Yes, familiar नहीं हो तो, if you are complete beginner, then you have to practice at least 2 mock tests or 3 mock tests every day, and especially for the reading part. Reading is tricky. yes, ma'am. I have more difficulties in reading. That's why I'm suffering. Yes, so for reading you have to practice for at least 2 to 3 mock tests every day. And even for speaking, if your target is more than 7, then you have to practice speaking mock test also. Focus on cue card also, because you have to speak for 2 minutes at a length, right? Yes, ma'am. Ma'am, where are you from? I'm from Delhi.
Oh, nice. In Delhi, where? South Which Delhi. place? South Delhi. Also. I'm also from in Delhi. Oh, wow. Yes, my office is in Daryaganj, Dr. Soft LTI Hospital. I'm working in that Okay. last 5 years. Great, great, great. Okay, so let's start our session, and we are going to talk about some of the linking words for your speaking module. Now, you know that whenever you start to speak, I advise you that you have to use connectors, you have to use cohesive devices, discourse markers, है ना? So that you can have your. अच्छा, one more thing. Does anybody know that in which parameter of speaking your discourse markers are evaluated, your linking words are evaluated? What are the parameters of speaking? कैसे आपकी स्पीकिंग इवैल्यूएट होती है, किस बेसिस पे? किसी को पता है मार्किंग क्राइटेरिया क्या है स्पीकिंग का? Coherence and cohesion. यस, कोहेरेंस एंड कोहेजन, बट कोहेरेंस एंड कोहेजन होता है स्पीकिंग में या समथिंग डिफरेंट? Lexical resource लेक्सिकल रिसोर्स, and grammar, ग्रामर, करेक्ट. or a There variety are of total sentences. four. There are total four. So can you Ma'am, Variety type of in the document. chat box? Vocabulary. Okay, wait, not like this. Please type in the chat box all the four parameters. Let me see how well you know about it. Four parameters होते हैं speaking के. Please write in the chat box कि वो parameters कौन कौन से होते हैं. Pronunciation, grammar, yes. Two more, Shivam. Fluency and coherence, vocabulary, lexical resources. Jasleen, task achievement is not in speaking, it's in writing. And Jyoti, verify of sentences. Verify of sentences is not a separate criteria. It comes under grammar. देखो, four parameters होते हैं. First is fluency and coherence. Coherence and cohesion नहीं होता, वो writing में होता है आपका, but इधर speaking में fluency check होती है आपकी, तो fluency and coherence होता है. Second is lexical resources. Elaboration of ideas is not a parameter. वो आपको, and wait, elaboration of ideas कोई भी parameter नहीं. आपको expand करना है अपने ideas को, it's not a parameter. सिर्फ four parameters होते हैं. So listen to it carefully. First is fluency and coherence. Second is grammatical range and accuracy. Third is lexical resources, and the fourth one is pronunciation. Right, so these are four parameters जिनके basis पे your speaking is evaluated. And do you know linking words कौन से parameters में आते हैं? It actually checks your coherence, कि आप कितने coherent हो, कितना organize कर सकते हो अपनी talk को, right? So let's look at कि linking words होते क्या हैं और कैसे आपको इनको organize करना है. So linking words वो words होते हैं जो connect करते हैं two phrases को, two sentences को या ideas को आपकी spoken form में और either in your written English language text. Because writing में भी we advise you to write linking words. आप discourse markers का use करो writing. So जब आपको लिंक करना है वर्ड्स को, यू कैन स्मूथली ट्रांजिशन फ्रॉम वन पार्ट टू द नेक्स्ट. कैसे? इससे आपका एक नेचुरल एंड इजी फ्लो दिखता है कि हाउ कोहेरेंटली यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर स्पीच, राइट, और ईदर इन योर रिटन फॉर्म. So linking words you use in your speaking section tell the examiner that you know the given topic,
and also help the examiner to check your fluency. Because if you're not organizing your talk, that means you're not fluent with your language. So knowledge of linking words is very important for your speaking test, right? Now, for those who speak English often, linking words or linkers come without any effort. That means वो regular use करते हैं, right? उनको कोई effort नहीं लगाना पड़ता कि वो put करें उसको अपनी speech में. But you have to ensure कि आपको overuse नहीं करना, right? So do not overuse any linking word, but yes, try to use it in the correct way. Now, linking words, yes, Jasleen, firstly, secondly, correct. Now, linking words, they improve your IELTS score because ये आपके coherence में आते हैं, आपकी fluency में आते हैं, right? So, yes. So, as for speaking, the public band descriptor asks you to connect your ideas in a fluent and coherent way. तो आप fluent and coherent way में अपनी speech को, अपने ideas को connect तब करते हो जब आप उनको linking word skills के through use करते हो, right? So how to use linking words? कैसे आपको use करने हैं linking words speaking में? Let's start with speaking. Linking words have two functions in speaking. They help guide the direction of your ideas and they give you time to think also. So two types हैं कि आप अपने ideas को direct करते हुए help कर सकते हो और second is कि वो आपको सोचने के लिए help करते हैं. जैसे मैंने last session में बताया था कि जब आपके पास time है, आपको अपने आइडियाज नहीं समझ आ रहे व्हाट टू से, तब आप क्या करते हो, लिंकिंग वर्ड का यूज कर देते हो. Oh well, that's an interesting question. Let me think about it, right? So for example, अगर आपको यूज करना है transition word, on the one hand, on the other hand, you signal to the listener that you are discussing two sides, है ना? One side ये, another side ये. अगर आप ऐसे बोलते हो इसका मतलब क्या है, आप बता रहे हो लिसनर को कि आप two sides को डिस्कस करने वाले हो, करेक्ट? सो आप डायरेक्शन दे रहे हो अपने आइडियाज की कि आप फर्स्ट साइड भी डिस्कस करोगे एंड देन यू गोना डिस्कस अबाउट द सेकंड साइड आल्सो. ट्रांजिशन वर्ड्स टेल द लिसनर टू बी अलर्ट फॉर बोथ द साइड्स, है ना, ऑपोजिट साइड के लिए भी. सो द लिसनर, द अदर फंक्शन इज गिविंग यू टाइम टू थिंक. फॉर इंस्टेंस, इफ यू से आई वांट टू गिव माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस, सो आप अपना ओपिनियन डिस्कस करने वाले हो और आपके पास टाइम है, आपने एक स्टेटमेंट बोला, लिंकिंग वर्ड पुट किया एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट? तो वो आइडियाज को ब्रिज करने के लिए लिंकर का एक फ्रेज मिल गया है जिसे आप क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो और उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अपने सेंटेंस को स्पीक कर सकते हो. Now let's look at some of the speaking linking words. Now how to use this, कुछ टिप्स जो आपको फोकस कराएंगी आपकी लिसनिंग स्किल्स के लिए, सॉरी योर लिंकिंग स्किल्स के लिए. टिप नंबर 1 इज डोंट ओवर यूज ट्रांजिशंस. ज्यादा यूज नहीं करना, कभी भी ओवर यूज नहीं करना. यू हैव टू यूज इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, राइट वे में यूज करना है, राइट? So I talk to a lot of teachers that always complain about this कि their English language students learn few transition words, है ना? कुछ transition words learn कर लेते हैं और उनको every sentence में use करते हैं. No, the grammar is correct but the writing seemed robotic. जब आप लिखते हो तब वो क्या लगता है, robotic लगता है कि एक रोबोट ने लिखा है सारी चीजों को. So every paragraph use first, second, third and finally. Try and read lots of example. Don't use them if you don't need to. So overuse नहीं करना, excess use नहीं करना. Right context में क्या करना है, आपको अपनी transitions का use करना. Okay. Second is be accurate. As mentioned, there are thousands of ways जिससे आप connect कर सकते हो अपने ideas को. So make sure आप correct करो उसको correctly. Do your homework and know the difference between phrases like results of and results in. So इसका आपको context पता होना चाहिए कि आप गलत use कर रहे हो कि correct use कर रहे हो, right? So अपने ideas को connect करने के लिए आपको accuracy लानी है. Grammatical range and accuracy में आपकी grammar structure को evaluate किया जाता है. So make sure जब आप use कर रहे हो तो उसको correct way में use करो.
Mix it up. Third strategy. I once had a friend who said actually about 100 per hour. It was really annoying. Remember that variety of effectively used phrases will give you the highest point. So कभी कभी आप क्या करते हो, मिक्स अप कर देते हो, जैसे एक्चुअली वर्ड्स का यूज करना बहुत बार, है ना, तो वो आपको नहीं करना. यू शुड यूज इट विद द करेक्ट फॉर्म. टिप नंबर 4, स्टॉप द ये वाले वर्ड्स फिलर्स. सो वन वे टू गेट अ लो मार्क, आपको स्पीकिंग टेस्ट में लो मार्क क्यों मिलता है, बिकॉज आप ये फिलर्स यूज करते हो, राइट. सो इंस्टेड ऑफ दिस इनका अलॉट यूज मत करो. ये शो करते हैं कि आप फ्लुएंट नहीं हो अपनी लैंग्वेज में. सो इनको रिप्लेस करो लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू और कोहेसिव डिवाइसेस या डिस्कोर्स मार्कर्स के थ्रू, राइट. Now, although transitions don't have meaning when they are all alone, but they are important part of your communication. और आपकी speaking skills इसके through improve होती है. Find some time to highlight. Practice करो, test दो, use करो English language या linking language का, ठीक है, ताकि आप एक better speaker और एक better writer बन पाओ. क्योंकि writing में भी आपको इसका use करना है और आपको speaking में भी इसका use करना है, right? Any doubts still here? Okay. Now some tips for linking words. Few more tips जो आपको ध्यान रखनी है कि linking words cannot be used everywhere. ये नहीं कि आपको अगर आंसर नहीं आता तो आप हर क्वेश्चन में linking words का यूज करने वाले हो. No. So when the examiner asks you to talk about yourself, अगर आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है तब आप linking word कैसे यूज करोगे? नहीं कर सकते, right? Usage of linking words in the speaking test is completely different from the linking words in the writing test. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि linking words का यूज जो आप speaking test में कर रहे हो और linking words जो आप writing test में करते हो, that is different. उसका usage different है, तो आपको right way में उसको यूज करना. Linking word like can be used only during speaking. लाइक का यूज आप स्पीकिंग में कर सकते हो जब आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो. इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज द लिंकिंग वर्ड लाइक व्हाइल राइटिंग. आप कभी अपने पैसेज में लाइक लिखते हो, पैराग्राफ्स में, और रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग? नो, डू नॉट यूज लाइक. यू कैन से फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, टू इलिस्ट्रेट, राइट. हम ये वाले कोहेसिव डिवाइसेस यूज करते हैं जब हम अपने पैराज लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. So you can use like in your speaking test, but not in your writing test. You will not get a high score only based on how many times you have used the linking words. आपको सिर्फ इस बेसिस पे स्कोर हाई नहीं मिलने वाला कि आपने कितने लिंकिंग वर्ड्स यूज करे हैं. वो कंटेंट जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाला है कि आपने राइट वे में लिंकिंग वर्ड्स यूज करे हैं और ओवर यूज नहीं करा, तब आपको हाई स्कोर मिलेगा, right? Linking words must come naturally while speaking. So आपको ये हैबिट होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस इस अकॉर्डिंग करनी है कि लिंकिंग वर्ड्स आपके नेचुरली दिखे. जब आप अपनी स्पीच को कन्वे कर रहे हो तब वो नेचुरल वे में दिखे. क्लियर? Now let's look at some of the linking words और connectors देखते हैं. Now these are simple connectors जिसे हम conjunctions भी बोलते हैं. Conjunctions का सेशन है पूरा ग्रामर पार्ट में. You can go to the grammar classes और वहां जाके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो conjunctions के बारे में. So कौन कौन सी होती है? And, but और o. These are very simple one. ठीक है. कॉम्प्लेक्स कनेक्टर्स कौन से होते हैं? जब आपको ऐड करना है मोर इन्फॉर्मेशन को अपनी सेंटेंस में, तब आप कॉम्प्लेक्स कनेक्टर्स को यूज कर सकते हो. लाइक फर्स्ट वन इज another reason is. So another reason for placing the pot outside is to get sunlight. Also he was interested in playing the piano. And the plant needs water and sunlight. As well as he was a writer as well as a soldier. So try to use connectors. ठीक है. अच्छा, टाइम फ्रेजेस. ओके, आई विल गिव यू वन कनेक्टर. आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, ठीक है. वन बाय वन यू हैव टू आंसर.
टाइम, जैसे ये कनेक्टर्स है ना, कॉम्प्लेक्स कनेक्टर्स, ऐसे हम टाइम फ्रेज कनेक्टर्स करते हैं। टाइम फ्रेज कनेक्टर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट कनेक्टर का नेम है एट द मोमेंट। कैन यू मेक वन सेंटेंस विद एट द मोमेंट? आई एम राइटिंग द कनेक्टर इन द चैट बॉक्स। आपको इससे एक सेंटेंस क्रिएट करना At the moment, है। my class is going on. Correct. Anybody else? At the moment, I am working in IT company. That's good. Shivam said, at the moment, I would like to have a cup of tea. Correct. Okay, next one. Next connector is right now. I don't find my charger at the moment. Correct. Right now. Right now, I am preparing for my IELTS. Yes. Right now, I'm talking. Right now, I'm talking with. okay. And right now, I'm in a meeting. Right now, Manmeet, right now is RIGHT. जो आपने right लिखा है, it's about writing, लिखना. Yes. Okay. Next one, at present. At present. At present. At present, I'm in India. At present, I'm in India. Yes. At present, I am searching for a good IELTS class. Yes, correct. And you have baby good application for that. At present, I'm going for shopping. At present, I am use my mobile to meeting. बहुत सारे grammatical errors हैं, Jocelyn. Yes. Okay, now these days. Start making sentence with these days. These days, I am preparing my IELTS. Yes, these days I'm preparing for my IELTS. These days, I am worried about my exam. These days, many of my country students want to pursue their studies in abroad. Hmm. Yes. These days I'm helping my mother in the kitchen. Correct. Using of phone enhanced these days. No. These days people give more preference to wear Western clothes than that of traditional clothes. Okay. Next one, nowadays. Nowadays. Start making sentence. Nowadays, weather is very hot. Hmm. Yes. Nowadays, people are talking about elections. People. Nowadays, people are talking about elections. Nowadays, IPL is going in our country. Okay, next one is before. Start making sentence with before. Before joining this class, my grammar was weak, but after joining this class, my grammar got better and get better. Hmm. Ma'am, get or get better or got better. Or you can say that my grammar improved. Okay, ma'am. Before joining the sessions, my grammar was weak. Okay, let's see next one, in the past. In the past.
Any sentence with in the past. In the past, I was novice in English. I was. Novice Mhm. in English class. Mhm. Any other? In the past, people were narrow-minded. Yes. Okay. Years ago. Years ago. Years ago. Years ago, there were no internet facilities in my country. Hmm. At that time. Next phrase is at that time. Yes. Anyone? At that time, when I was in school, there were no facilities of sports. Hmm. I'm telling you. Yes. At that time, the corona cases were rising. At that time. The COVID cases were rising. Hmm. Not correct. At that time, in 2019, the COVID-19 came. Hmm. Then. 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 Now see. You can see the answers also. These are all time phrases. करेक्ट सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको कौन सा लिंकिंग वर्ड कहाँ यूज करना है दीज आर ऑल फॉर टाइम पार्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स causes and solution. So now make one sentence with because. Because. Because I am an introvert person. Because I'm an introvert person, it's incomplete sentence. I love to wear red t-shirts because I love red color. Any other? I like my own company because I am an introvert person. So Tomorrow I because I'm can't an attend introvert class because person, I am I going love for working. talking to myself, or I love sitting alone, or I love hanging out alone. Yes, who Okay, was the ma'am. next person? Ramandeep, or sorry, I missed out. Tomorrow I can't attend class because I am going for work. Tomorrow I'm unable to attend the class as I Because have I am going. because I have my work. Okay. Yeah. Next is I guess it is because of. I got 6.5 bands in my IELTS scores because of the babycode applications. I guess it is because of the baby code application. Okay. Next one. The main reason is. The main reason is. You have to make sentence for the main reason. The main reason for the failure is not working hard. Yes. Anyone Is it else? correct? Yes. The main reason for failure is not to work hard. I think the main reason for obesity is eating lots of sugar. Yes. Is excessive sugar intake.
है ना, आप पैराफ्रेज कर सकते हो. You can use synonyms to have your, to showcase your better speaking skills. Next one, the main reason. The main reason. I got only 3 replies, right? Anyone else? The main reason. Yes, Raman, you want to try? The main reason for attending the live session is to improve my speaking skills, right? Yes, ma'am. Okay, next one. Mobile phone is the main reason. Mobile phone is the main reason why children don't go outside to play nowadays. Yes. Global warming increase. Global warming increase these days. Is increasing these days. I think the main reason is behind this a large amount of. I think the main reason behind increase in global warming is large amount of vehicles or excessive use of vehicles, right? Vehicles का यूज होगा तभी तो इंक्रीज होगी ना. लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीकल्स के होने से तो नहीं होगा ना, वो तो शोरूम के अंदर भी है. Okay, next one. The best way to solve this is, make sentence with the best way to solve this. Afforestation is the best way to solve the global warming. Yes. Ma'am, can you repeat? The best way to solve this. The best way to solve IELTS speaking is to using of babycode application, I think. But you can't solve Yeah. because the sentence Yes, is yes. about solve. Yeah, ma'am. Best way to solve, make some other sentence. वो improve हो जाएगा. आप speaking की problem को solve कर सकते हो और improve कर सकते हो. The best way to solve a problem is to work hard for it, right? Any another sentence, the best way to solve? The best way to solve this is to take a help from the experts, correct? Okay, now, Practicing more and more is the best way to solve any sum of mathematics. yes, correct. The best way to solve the problem is by practice. Okay, now see the answers for causes and solutions जो हमने practice करे अभी. Okay, now let's do one more. Expressing ideas. First one is, I think one important thing is. अब आप इसको कैसे यूज करोगे? This is a phrase जो एक्सप्रेस करता है आइडिया. I think one important thing is. Ma'am, can you repeat? I think one important thing is. Okay, I'm gonna show you with example. See, I think one important thing is missing here.
आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो. इट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग आइडियाज कि आप आइडियाज कैसे एक्सप्रेस कर सकते. आई थिंक द मेन डिफरेंस इज between a hen and a sparrow is that the latter can fly high. I guess one difference between the twins is the color of their eyes. So these are the linking words for expressing ideas. For example, now some of the linking words, for example, for instance, they must be creative. For instance, look at this statement. Like, he looked like his father. For example, look at the piece of jewelry. Such as, he had worked for big companies such as ABC. You have to make examples. ठीक है ना? Examples के लिए you can use all these words. Okay, contrast के लिए use करते हैं हम. Now let's talk about contrasting. Contrasting के लिए क्या use कर सकते हैं? Let's see this. And for being clear. Is my screen visible? For being clear and contrasting. So when you have to clearly state a sentence, जब आपको clearly state करना है अपने sentence को, you can use these linking words. What I want to say is, they don't look alike. So आप clear हो अपने statement को लेके. As I was saying, you should submit your taxes. What I mean is, you should not get scared of dogs, else they will bite you. Contrasting, but the movie was not very interesting. While you were in London, your sister moved to a new house. On the other hand, you have to practice these. आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी. ओके कि क्लियर वाले कौन से हैं, कॉन्ट्रास्टिंग वाले कौन से हैं, टाइम फ्रेज कौन से हैं, एक्सप्रेसिंग आइडियाज कौन से हैं, एग्जाम्पल्स के लिए आपको कौन से लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं. सो मेक श्योर कि आप इनको ध्यान से रिमेम्बर रखो. ऑन द अदर हैंड, although you know it well, you need to practice, or you should go via route A or B. Let's look at stating an opinion. जब आपको state करना है अपना opinion about a topic, then you will use these linking words. As far as I am concerned, in my opinion, I believe that from my point of view. So you have to use for stating an opinion. फर्स्टली मैम यूज कर सकते हैं. Yes, Jasleen? फर्स्टली भी यूज कर सकते हैं. Firstly is not for stating an opinion. वो sequencing के लिए use होता है firstly. ओके. सेकेंडली आप सीक्वेंस कर रहे हो जब अपनी इंफॉर्मेशन को, वो तब यूज होगा. आप अपना ओपिनियन स्टेट करोगे तो यू विल यूज दीज लिंकिंग वर्ड्स. ओके मैम. टू एक्सप्रेस एन एग्रीमेंट, आई एम इन एन एग्रीमेंट विद हिम. आई क्वाइट एग्री दैट, आई एम शॉर्ट, आई एक्सेप्ट दैट, आई शुड oblige. Exactly, that's what I meant. So stating an opinion के लिए different linking words, express agreement करने के लिए different linking words. Okay? Now, एग्रीमेंट मतलब क्या है यहाँ पे? you have to agree with the statement. अगर आप agree करते हो, there must be two viewpoints. आपने एक से agree करा होगा, तो तब आप agreement use कर रहे हो, right? आप अपनी agree दिखा रहे हो कि yes, you are getting agree with the statement. ओके मैम. Now sign posting language. साइन पोस्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? साइन पोस्टिंग लैंग्वेज वो मैनर है जिसमें क्या हो रहा है, स्पीकर को गाइड किया जा रहा है. स्पीकर गाइड्स हिज ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को गाइड करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं. नाउ यू नो लिसनिंग का जो पार्ट 4 होता है उसमें साइन पोस्टिंग लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एक्सेस में यूज की जाती है. बिकॉज इन पार्ट 4 जो आपका लिसनिंग होता है उसमें आपको साइन पोस्टिंग लैंग्वेज के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है, जो भी स्पीच होती है.
So some signpost words क्या होते हैं? To begin with, however, in the same way, unfortunately, likewise, similarly, nonetheless, fundamentally, incidentally, furthermore. So ये सारे signpost words हैं. Okay, so do remember all these signposting words. अब आप इनका यूज कैसे करते हो? देखो नीचे एग्जाम्पल गिवन है. To begin with, let's look at the eyes of painting. Ram had some inhibitions on a driving top in the hill. However, his fears vanished later. So contrast हो रहा है. You should make a decoction of the coffee, but not in the same way as tea. Unfortunately, his illness did not get in any better way. आज what you do is, आज क्या करना आप लोग, एक बार सेक्शन 4 लिसनिंग का सुनना, उसमें आप चेक करना आपको साइन पोस्टिंग वर्ड्स मिलेंगे, और मैंने साइन पोस्टिंग वर्ड्स कराई भी है लिसनिंग. तो व्हेन वी विल डू लिसनिंग, जब हम लिसनिंग करेंगे एक बार दोबारा उसको रिवाइज करेंगे. ठीक है. गैप फिलर्स, इंग्लिश लैंग्वेज में गैप फिलर्स, यू नो ना गैप फिलर्स क्या होते हैं? वेल ये सारे वर्ड्स का यूज करना. तो आपको इनको अवॉइड करके क्या करना है? डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज करना. इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस करो कि आप डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज करो, लिंकिंग वर्ड्स का यूज करो. ना लुक एट द इम्पोर्टेंस. क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि लिंकिंग वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं टेस्ट टेकर के स्ट्रक्चर को, सेंटेंसेस दैट दे आर गोइंग टू यूज, स्पीकिंग ऑन द गिवन टॉपिक, बिकॉज आप कोहेरेंस में, आपकी फ्लुएंसी में ये सबसे पहले इवैल्यूएट होते हैं. Linking words also help the test taker to go on speaking until the examiner asks him to stop. आप fillers का यूज नहीं करोगे अगर आपको प्रैक्टिस है linkers का यूज करने का, right? So if you are using linking words, आप avoid करोगे अपने fillers को. Linking words can be used when you have to highlight. So you can use the linking words. Introduction में भी use कर सकते हो, conclusion में भी use कर सकते हो. As a result, results and results of, जो भी conclusion के आपके linking words है उनका use करो. Linking words use करने से you can also phrase an example if the sentence given is not understandable. तो आप example भी दे सकते हो, right? Linking word का use करके. The purpose as well as the opinion of sentence that is spoken can be explained using the linking word, है ना? Opinion जब हम state करते हैं तब भी हम linking words का use कर सकते हैं. Agreement कर रहे हैं तब भी हम एक linking word का use कर सकते हैं. तो वो बहुत अच्छे से explain हो जाता है. It showcase your speaking skill. So if you can use the linking words correctly in the sentence, then you can get 25% of the marks. Now how 25 is, because जो आपका marking criteria होता है वो 25 करके होता है, because 4 पैरामीटर है. So चारों पैरामीटर्स 25% की मार्किंग से होते हैं. Each का contribution 25%. So I'm giving you this cue card. मैं ये cue card दे रही हूँ, and next class on Monday I'm gonna ask you this question. ठीक है? I want you to prepare for it with your cameras on, not your cameras off. Okay? It's a very general question. Describe your favorite movie. You should say when and where you saw it. देखो you should say लिखा होता है, तो remember आपको ये चीज ध्यान रखनी है. बुलेट पॉइंट्स ये जो 4 दिए हैं ये मैंडेटरी नहीं होते. It's just for your help. बैंड पैरामीटर्स में, मार्किंग क्राइटेरिया में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना है. आपको ये जो ऊपर का टॉपिक है ना, डिस्क्राइब योर फेवरेट मूवी, इससे रिलेटेड 2 मिनट्स बोलना है. ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होते हैं 4 बुलेट पॉइंट्स. It's up to you if you want to discuss. If you do not want to discuss these points, आप उनको skip भी कर सकते हो. Okay? Okay, ma'am. And, but I'm showing you one example also. So ये आंसर आपका नहीं होना चाहिए. Example is different. But यहाँ पे आप देखो connectors कैसे use किए गए हैं. To begin with, first sentence, to begin with, connector है. With the very question of what is your favorite movie, to the cinephile like me, the person who watch movie, is a tough query. What I mean is there are countless parameters.
and factors that determine particular individual preferred movie. As far as I'm concerned, ये देखो opinion, ठीक है, opinion related linker है यहाँ पे. The best piece of cinematic work and my personal favorite is Pulp Fiction, written and directed by this and this. Although, see, linking word is here. There are several others. This and this now made me realize in the past, time phrase is here. I never paid much attention to the genre and the language of the film. I believe this and this. Another reason is that once. So again यहाँ पे क्या है, linking word connected है. Now again the linking word, in my opinion, last 3 lines. I quite agree. So see, nonetheless, आपको ओवर यूज नहीं करना, जहां पे करेक्ट यूसेज कर सकते हो वहीं पे ही आपको यूज करना. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सारे लिंकिंग वर्ड्स आपके यूज हुए हैं इस सैम्पल आंसर में. टू बिगिन विद, व्हाट आई मीन इज and, or, as far as I'm concerned, although, in the past, I believe that these all are used. Shivam, if you want to look at the best way to make a cue card, please, आपने सेशन शायद मिस कर दिया है क्यू कार्ड का. You can go to that क्यू कार्ड वाला सेशन जाकर देखो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स में, and then you will be able to look for your cue card कि कैसे आपको क्यू कार्ड फ्रेम करना है. Okay, you are attending this Okay. session for the first time na, so please watch the recording session for cue card. I guess cue card was the 3rd session. You can see all the sessions in IELTS classes. So any doubt in today's part, please let me know. Those who are attending this session for the first time, let me tell them कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो लाइव स्पीकिंग विद द बेबी कोड एप्लीकेशन, और आपको एग्जैक्ट स्कोरिंग मिलेगी अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स, जो आपके स्पीकिंग के 4 मार्किंग क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्किंग मिलने वाली है, बैंड स्कोर्स मिलने वाले हैं. आप एप्लीकेशन में अपना स्पीकिंग टेस्ट ऐसे दे सकते हो, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, आप मल्टीपल टेस्ट दे सकते हो. वहाँ पे लाइव स्पीकिंग है. आपको पार्ट 1 की प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की, यू कैन डू पार्ट 1. क्यू कार्ड प्रैक्टिस करने, आप क्यू कार्ड भी प्रैक्टिस कर सकते हो. जस्ट नॉमिनल मेंबरशिप की, पूरे ईयर की मेंबरशिप इज ऑल अबाउट 500 रुपीज. सो यू कैन टेक द मेंबरशिप. लेटेस्ट क्यू कार्ड्स, ठीक है, लेटेस्ट क्यू कार्ड्स के लिए यू कैन डाउनलोड द स्पीकिंग पीडीएफ बुक जो ऑलरेडी लॉन्च हो रखी है बेबी कोड एप्लीकेशन में. यू कैन सी द एप्लीकेशन में आप जाके जो शॉप वाला कॉलम है, एप्लीकेशन ओपन करते ही शॉप वाले कॉलम में आपको स्पीकिंग लेटेस्ट क्वेश्चन बुक मिल जाएगी. इट्स ऑफ ओनली 50 रुपीज. तो आपको सारे वहां पे लेटेस्ट मिल जाएंगे. पार्ट 1 के क्वेश्चंस, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑल आर अवेलेबल. वो सब लेटेस्ट है, रिसेंटली ही वो अपलोड हुई है ऐप में, तो आप उसके थ्रू अपने लेटेस्ट क्वेश्चंस ले सकते हो. ओके, Okay, ma'am. and you all can re-watch this session. आप इस सेशन को दोबारा से एप्लीकेशन में देख सकते हो और यूट्यूब पर भी देख सकते हो. But make sure every time when you watch the sessions, you have any doubt, any queries, तो आप you can write the comment section. Comment section में लिखो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है. When I'm gonna watch those comments, I'm gonna reply them. So, ठीक है, और even in the classes भी आप मुझसे डाउट्स ले सकते हो. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Now, any doubt in today's part? No, ma'am. Clear? So now tomorrow there will be no class. We will be having class now on Monday. Okay, ma'am. The next topic which we are going to discuss is about, I guess, do's and don'ts. Okay, how to use idioms. We will talk about idioms in the next class. So be prepared for idioms. Okay? Okay, ma'am.
Okay, then see you tomorrow. No, sorry, not tomorrow. ma'am. See you on Monday. Bye bye. Take Thank you, care, all ma'am. of you. Okay, Thank you, ma'am. Bye. Bye. And do Thank share your you. feedbacks below to the in the comment section later on. Okay, ma'am. Okay, when this Okay. class will be ma'am. uploaded, then you can share your feedbacks. Okay, ma'am. Okay, Thank ma'am. you. Bye. Okay, ma'am. Bye. Bye.